Thank you, MC, for your kind introduction. Mrs. Vidya Singh, the President, Central Suva Arya Samaj, respected Pandit Ji, Gurdat Arya Ratna, and Pandit Gurudat Arya Ratna, President and members of the Central Suva Arya Mahila Mandal, distinguished guests, teachers and students who are present today, media representatives, ladies and gentlemen. आप सबको मेरा प्रणाम, namaste and a very good morning to each one of you. Before I start, मुझे एक disclaimer से शुरू करना चाहिए. Disclaimer यही रहेगा कि सब पुरुष एक रकम नहीं है. Right? I just want to say, क्योंकि during my speech you will hear the atrocities women have to deal with. लेकिन ये सब घर में नहीं होता है. I can vouch for myself. मैं बहुत lucky थी कि I had a very good father-in-law, my husband and my sons. They all helped me to be where I am. So I have seen the best. लेकिन सब स्त्री के किस्मत में ये नहीं होता है. We know that. There is no denial. अगर आप statistics देखेंगे, आपके सामने क्या हो रहा है? Statistics is an evidence in itself to tell us that despite the fact कि International Women's Day celebration 1908 से शुरू हुआ था in a small community, लेकिन आज तक वो celebration चल रहा है. क्यों चल रहा है? अगर सब ठीक हो गया तो celebration भी बंद करो, लेकिन ठीक नहीं है. आप जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और आप फैमिली में भी देखे होंगे, and I'm sure all the ladies seated here वो भी witness करे होंगे कि काफी स्त्री को दुख झेलना पड़ता है normal simple things के लिए. अगर सब ठीक रहता तो आज ये सेलिब्रेशन नहीं होता और आज मार्च 8 इतना बड़ा तरह से नहीं मनाया जाता. क्यों मार्च 8 को इतना बड़ी वैसे सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि अभी भी अत्याचार हो रहा है. And we need to stop that. एक बहुत सिंपल चीज जो औरत करना चाहते हैं उनके ऊपर रोक टोक देता. कहाँ जा रहा है, कहाँ जाते, क्या खाते, किससे मिलते, क्यों घर में खाना नहीं बना, क्यों बच्चे लोग को आज देर से उठे. छोटा चीज उसको हम कहते हैं नेगिंग. क्योंकि अगर आप पुरुष और मर्द और औरत को साथ में देखेंगे, वी आर सेम. उसमें कोई फर्क नहीं है. बायोलॉजिकली फर्क है. men are more strong biologically, genetically, लेकिन औरत किसी से कम नहीं है. वो भी उतना ही योगदान देती है घर में, कम्युनिटी में और देश के लिए, लेकिन उनको उतना सम्मान नहीं मिलता है. और मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस में बात कर रही हूँ. जबकि मुझे बहुत सम्मान मिला है अपने खुद के फैमिली में, इंक्लूडिंग माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स. मैं सबसे बड़ी हूँ और जो मैं कहती हूँ सब मानते हैं. एक जिम्मेदारी रहता है कि कुछ भी करो घर में तो एक फेयरनेस और जस्टिस को लेकर. ऐसे नहीं कि विदिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू साइड विद वन और टू एंड यू लीव द अदर्स. इसी में तो फैमिली डिस्प्यूट्स होता है. लेकिन अगर आप देखेंगे 1908 में जब विमेंस डे सेलिब्रेशन नहीं था,
वो हम कहते थे विमेन सफरेज, यानी कि उस समय विमेन अपने दुख को लेकर वो बयान करते थे कोई भी फोरम में। जैसे कि औरत लोग को वोटिंग करने का मौका नहीं मिलता था, उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उसमें भी वो डिस्पैरिटी था। अभी भी इस देश में होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। अगर आपके घर में एक गार्डनर काम कर रहे हैं और एक मेड काम कर रही है, पहले फर्क होता है। वो एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है कि वो मर्द बाहर काम कर रहा है, काम में काम कर रहा है, तो उनका तलब थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और जो औरत सब पूरा घर द्वार देख रही है, उनको जो मेड है उनको थोड़ा कम तलब मिलता है। वो सब दिस इज हैपनिंग इवन नाउ इन हाउसहोल्ड, बट वी नीड टू स्टॉप दैट, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। अब देखा गया है कि सब चीज में वी कैन नॉट ब्लेम द मैन, वी कैन नॉट ब्लेम देम। कभी कभी स्त्री women they have inner inhibitions, वो अपने आप को डाउट करते हैं कि मैं उतना केपेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, और उनको वो सपोर्ट चाहिए, थोड़ा पुश चाहिए। जब वो पुश मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है, तब वो आगे बढ़ती है। बट majority of the time जो हम कहते हैं अनकॉन्शियस बायसनेस हमारे अंदर है, हमको वो हटाना चाहिए। And we must tell ourselves that we are very capable, हम सब कुछ कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? Women and men, we are in partnership. Marriage is partnership. We are in partnership. जैसे पंडित जी ने कहा कि जो हमारे from the religious point of view, women are given equal status. और आर्य समाज में तो बहुत equal status है. I know it because I started off from a Sanatani family, and I've seen Sanatani weddings where इतना power आदमी पहले औरत लेगा, फिर उसके बाद में the man will take over. वो एक cultural distortion है, और वो ingrained हो जाता है कि I am in control, तो or you must walk behind me. लेकिन आर्य समाज में ऐसा नहीं होता है, you walk side by side, and that is so impressive. जब मेरा शादी हुआ था, पंडित भोज जी ने कराया, it was something that really touched me. क्योंकि when I was growing up, that's all I saw. But I would say that I was very lucky. अगर आप अपना नजर, if we turn our attention towards nation and the importance of women and how they have been excelling. Women in leadership, ये एक बहुत बड़ा समस्या है इस देश में। जबकि औरत घर चलाती है, औरत मंडली भी चलाती है, अगर नेबा में कुछ हुआ, फैमिली में कुछ हुआ, the husbands will go to their wives and say, "अच्छा, इसके कुछ करा दे," you know, they take opinion, and women take the lead. लेकिन जब देश चलाने की बात होती है, unfortunately, there are parts, or you can say there are people who feel that women are not capable. अगर उनको एक पोजीशन दिया जाएगा तो वो उतना अच्छा से नहीं निभा पाएंगे। और ये भी स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे, जैसे कि अच्छा स्टार्ट ऑफ विद इस देश में कितना सीईओज है, विमेन सीईओज जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही है, सिर्फ 10%। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ऑर्गेनाइजेशन से 90% are headed by men. फिर अगर आप देखेंगे बोर्ड्स और कमिटीज,
बोर्ड मेंबर्स और चेयर्स और कमिटी मेंबर्स, तो आप देखेंगे कि उसमें भी स्टैटिस्टिक्स शोज, एंड ये रिसेंट स्टैटिस्टिक्स है, 2021 का स्टैटिस्टिक्स है, that 20% of women are chairs and board members. क्यों? आखिर क्यों? That's the question. Why? फिर अगर आप पार्लियामेंट में भी देखेंगे, we started off बहुत अच्छे से, we started off. We had 22% women representing women in parliament. लेकिन अब वो स्टैटिस्टिक्स गिर के 17.6 हुआ, यानी कि in parliament we have 9 women and 42 men. जबकि women population, देश की population अगर आप देखेंगे, 50% है मेल और 50% है फीमेल. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो हम औरत है, women, क्योंकि हम सदा दिन we've seen our fathers leading, we've seen our brothers leading, we've seen our mothers standing behind, doing all the background work. एक मेंटालिटी हो जाता है कि हाँ चलो, अगर इलेक्शन टाइम हुआ तो हम मेल्स को ही वोट देंगे क्योंकि वो देश अच्छा चलाएंगे, and women they're left behind. ऐसा ही हुआ. So we have to think कि आप अगर women को बढ़ोतरी देना चाहते हैं and you want to treat them equal, so we have to change our mindset. जैसे पंडित जी ने कहा, mindset दोनों तरफ से change करना चाहिए. Women have to change their mindset and don't feel that you are weak, or you are not capable, you can't do it, you need to be in the shadow of a man. जो man है वो तुम्हारा partner है, that's your father, that's your son, that's your husband. फिर क्यों? Why do you think you are not capable of being in this partnership? और जो मेल्स हैं उनको भी अपना मेंटालिटी बदलना चाहिए. आज इस जमाने में 21st सेंचुरी में देखा जाता है कि औरत अपनी जान दे देती है, they are killed, क्योंकि आदमी नगोना पीकर देर में आया घर पे और औरत दिन भर काम करके सो गई और वो उठकर खाना नहीं गरमाया और पति को दिया नहीं, तो फिर क्या मिलता है? लात घुसा. ऐसा नहीं होता है. And we have seen women being killed for small little things. Why? Again, वही question होता है, क्यों? We have seen that women are treated like a punching bag, or they are seen as an object. एक object है, एक खिलौना है, which men can use as and when they like. इसलिए इस समाज में अगर आप statistics फिर देखेंगे, I'm talking about facts and figures, not one or two or say less than 50% cases that we are aware of, which gives a very good impression, like my life. It gives a very good impression. But ऐसा सबके जिंदगी में नहीं है. It's not there. And we have also seen women domestic violence or bullying, including gender-based violence. क्योंकि you are a woman, you can be treated differently. ये हो रहा है हमारे समाज में. But I've also seen कि हमारे समाज में changes भी आ रहा है. ऐसे नहीं कि we are not changing, men are not changing, women are not changing, community is not changing. We are all changing. धीरे धीरे वो बदलाव आ रहा है. We've seen it. और देखा जाता है कि एक घर में सबसे क्लोज पिता का जो पेट होता है वो कौन होता है घर में? सदा दिन एक बेटी. Am I right? फिर कैसे वही पिता जो अपने बेटी के लिए अपना जान दे सकता है, फिर unfortunately when that daughter is married and goes into another family, वहाँ पे वो दूसरा आदमी is so atrocious. It just doesn't make sense. Inconsistent हो जाता है ना. We have to bring in consistency.
लेकिन मेरा ख्याल ये है कि if we want to change this gender based violence या domestic violence जो हो रहा है देश में, we can change that घर से और schools में. घर में it's the mothers who raise the kids. लेकिन ये भी देखा गया है कि घर में women are also biased towards their children. अगर बेटी है तो जाओ बर्तन धो, खाना बनाओ, कपड़ा ही करो, वो करो. We become very stereotyped. और अगर लड़का है तो उसके दुलार करो, बेटा वरी नहीं, तुम बैठो, खाना निकाल के तुम्हें देता. सिचुएशन और वर्स हो जाता है अगर घर में mother-in-law रहती है. Again, another woman. जो mother-in-law रहेगी, वो she will always speak to the daughter-in-law कि काहे नहीं तुम खाना नहीं रखा, माँ लड़का करती, तुम खाना निकाल के रखो. So that royal treatment starts there. And previously, we used to live in a joint family system. And this is what I have seen it. And I'm sure other women seated here will agree with me. So we can't blame the world for this gender inequality, because as mothers, as sisters, we are the ones who are raising the kids from the early stages, and we need to remove this stereotyping. फिर अगर बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, again if we look at the statistics, 69% of teachers are females, and barely 31% are male. लेकिन वो भेदभाव स्कूल में भी रहता है. It's like it's in our mind. अगर हम अपने दिमाग से निकालेंगे तो हम बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं. So that's what I wanted to say. मैं इतना भी कहना चाहती हूँ कि government has been working tirelessly to empower women. इसीलिए एक Ministry of Women has been created, क्योंकि हम जानते हैं कि when it comes to education, a lot of emphasis is placed on men, not the girl child. Girl child का जो पुराना ख्यालात था, पुराना, अभी ऐसा नहीं होता है. कुछ families में होता है, where parents always say कि नहीं हमारे दो बच्चे हैं, they'll get equal education, सब equal हो. लेकिन चलो आज बात करते हैं एक और मुद्दा पे. ये है जो हमारा इनहेरिटेंस रहता है, पेरेंट्स का इनहेरिटेंस जो हम कमाते हैं और आखिरी में हम छोड़ के जाते हैं. नॉर्मली हम इनहेरिटेंस किसको देते हैं? That is the wrong footing for the women, for the girls. इसका मतलब नहीं हुआ कि अगर बेटी है उनका शादी कर दे तो उनको कुछ देंगे नहीं, बस वही डाउरी में कुछ जो दे दिया तो दे दिया, ज्वेलरीज दे दिया, बस हो गया. That is not acceptable. अगर दो बच्चे हैं, girl and a boy, why can't your inheritance be divided between the two? That's your children. ये change हो रहा है. I've seen families who are now very focused कि अगर हमारा inheritance है, हम share करेंगे दोनों, male और female, both the kids. And it's a good change. क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि when it comes to inheritance, अगर बेटियों को वो inheritance नहीं मिलता है, they don't get that wealth, they're not able to start their journey and be independent, or if they want to start a business, they can do it on their own. तो ये भी एक समाज में we have to bring about that change. I also like to take this opportunity to pay my deepest respect to the founders and also the school management committee for Arya Samaj. They have been providing education to our children for many, many years, and you've done a wonderful work in that area, and we appreciate the education you've been providing to the people of Fiji.
I also take this opportunity to thank teachers, plus the parents and everyone seated here who decided to get vaccinated. आज आपके vaccination के द्वारा we were able to open the country and improve our economic recovery. And we embarked on our economic recovery. जैसे जितना restrictions था वो धीरे धीरे हट रहा है और अभी हाल में गवर्नमेंट सेक्रेटरी डॉक्टर जेम्स फॉर्म ने कहा कि जो 3-day क्वारंटीन है होटल्स में वो भी वो रिमूव कर देंगे. So normalcy धीरे धीरे आ रहा है. And I'm also very grateful to the parents for sending their children to school. As a minister responsible for education, it has been a nightmare just thinking around the clock. The children are at home, they're missing out on their education, and there is no recovery to the loss of learning. There is no process through which we can recover 9 months of loss of learning. Itna bhi teachers koshish kare, a loss is a loss. You won't be able to recover 100%. And I'm also thankful we managed to complete Year 12 and Year 13 external exams. On March 16th, I'm meeting my team at ministry because results will be coming out on 17th of March. Within a couple of weeks, we will release the result so that our Year 12 and 13 students can make a decision and they can move on to tertiary institution. और आप ये भी जानते हैं कि April 8 को स्कूल शुरू होगा and that would be our new school year. यानी कि we will be closing 2021 school year at the end of March, and after that the teachers and students will take 1 week break and then they will come back on 8th of March for the new school year. So I just wanted to thank each and every one of you seated here for your contribution towards our economic recovery simply because of COVID pandemic. Your assistance has, there were people who were predicting gloom and doom, but that is not the case. We have seen at one particular time, people were very adverse when the government made the decision that our strategy is a single strategy, and the strategy is vaccination, vaccination, and vaccination. And we've seen, because of vaccination, we were one of the first countries in the South Pacific that we were able to open up and move with our economic recovery. Now that would not have been possible. We can have a strategy, but if we don't have people to support that strategy, then it becomes a failure. So this success actually goes to the people of Fiji for your contribution in economic recovery. You have been part and parcel of government strategy and the fact that you decided to get vaccinated. So thank you very much. And for International Women's Day, I just want to wish each and every one of you a happy International Women's Day. And again, I would like to end with a disclaimer that not all men are same. There are many men that I know. They strongly believe in equality. They believe in women empowerment. And I want to congratulate all the men seated here. Thank you for your support. If you didn't believe in it, you wouldn't be sitting here today. And as women, we appreciate you being here so that our little message that we are trying to give from this podium can be taken by men when you have your own small Talanoa session or you're having discussion around the group bar, you can impart this information. So I hope you will take this in a positive stride. And what I spoke today is purely from my experience, based on data and facts, and what we all have seen happening around us. So, dhanyavad. Thank you very much, Gunaka.